person in this conference.
Good evening, everyone. Just give me a second. सॉरी फॉर दैट. चलिए शुरू करते हैं. I hope everyone can see me. I'm visible as well as the PPT is visible. So let us start. Good afternoon, everyone. शुरू करते हैं. Is it visible? It is sufficiently zoomed in. क्या everyone को दिख रहा होगा? Is there anyone in the class who has come for the first time? कोई भी है जो पहली बार आ रहा है इस क्लास में? रोहित, you are for the first. Okay, 2 people are for the first. Cool. So for you, this is the basically current event class, and keep this in mind. Current event kind of updation. So it's the kind of updation to your existing note. जो भी आप पढ़ते हैं classes में, what we do is we kind of apply them in real life and just see if there is a new change. Updation, basically static content का updation. So I would suggest Plutus IAS पे एक video है, please watch it. Plutus IAS, that is the YouTube portal. Go to YouTube portal and there I have made a video. Webcast, you will find a video, the art of cracking civil service. Okay, so that becomes a bit of problem. यहाँ पे कोई है a person who does not understand Hindi? Konyak, do you understand Hindi? English, okay. Okay, ठीक है, we will try our level best. What I'm trying to say is, please watch that video first. This video को please, as soon as the class gets over, do watch this video. Plutus IAS portal पे आपको मिल जाएगी, the art of technical UPSC civil services. Please watch it. वहाँ पे हमने comprehensive understanding बनाई है. Thank you, Amber. This is the link I believe that he has sent. So please watch this video so that you can get to know कि कैसे आपको कंटेंट बनाना, कैसे प्रिपेयर करना, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है. वहां से you can pick some point and everything. जो भी आपको जानना है, how to proceed is available there. ठीक है. बाकी without ado, let us start our video. Let us start the lecture today. The first news that we have is with respect to space warfare. Recently, the chief of staff
What is chief of staff? Basically हमारा जो आर्मी है, the army, navy, the air force. So the top most position in these are known as chief of staff. It will be known as chief of staff armed forces, chief of staff navy, chief of staff air force. एक अलग होता है CDS, वो chief of defense staff होता है, वो अलग है. CDS or the chief of defense staff is the ultimate boss. All these chief of staff of army, chief of staff of navy, chief of staff of air force, all these people ultimately report to CDS. CDS is the most senior most position, and this person does not concern with day-to-day affair of the armed forces. Army का जो general होता है, the chief of staff of armed forces, the general, that person regulates the army. Similarly, chief of staff navy regulates the navy, chief of staff air force regulates the air force. They carry out all the function of their respective branch. CDS is basically a congruence. इसका काम होता है to make to achieve a broad congruence among all the chief of staff, ताकि जितने भी हमारे wings हैं armed forces के, वो सारे एक comprehensive approach के साथ, एक congruence के साथ चले बेसिकली. ठीक है, keep that in mind. तो चीफ ऑफ स्टाफ की यहाँ पे बात हो रही है. तो चीफ ऑफ स्टाफ said that the world is slowly heading toward militarization space. Weaponization space refer to the use of outer space for military purpose. Basically, न्यूज़ ये थी, they made a comment that the world is slowly heading toward militarization of space. इसका थोड़ा सा रेफरेंस हम समझेंगे. It is not new. 1970s में, in 1970s you had something called Cold War was going on. Cold War you will study in world history. What was Cold War? It was a war between the US-led capitalist bloc and the USSR-led communist bloc. The USA versus USSR. Amisha, you raise the hand. Any issue? Or it was accidental issue? Kind of ideological war. Why it is called Cold War? Because it was not a hot war. The USA and USSR were not going for direct fight with each other. They were using different means. And keep this in mind from particularly 1945, when the Second World War particularly ended, to 1991. This is the period of Cold War. 1991, there was not even a single event in the world, not even a single event in the world that was not a part of Cold War. इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, इंडिया चाइना वॉर हो, आपका क्या बोलते हैं वियतनाम वॉर हो, आपका क्यूबन मिसाइल के जितने भी इवेंट हुए हैं बिटवीन 1945 टू 1991, यूएसए एंड यूएसएसआर वर डायरेक्ट पार्टी और इनडायरेक्ट पार्टी. कोई ऐसी वॉर, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें ये पार्टी नहीं. दैट लाइक इज मोस्ट सिग्निफिकेंट. हम बात कर रहे हैं वेपनाइजेशन स्पेस में. In 1970s यूएस गॉट अ न्यू प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन. Ronald Reagan, and this person is initiated something called a Strategic Defense Initiative. What is it? SDI. Strategic Defense Initiative. Basically, popularly some बोलते हैं Star Wars. What was the purpose? The purpose that US thought is, why shouldn't we place nuclear armed missiles? Why don't we place nuclear armed missiles in satellite itself? अब मान लेते हैं you have for example रशिया के ऊपर एक सैटेलाइट होगी, this will be equipped by a weapon of mass destruction. So if you want to achieve a attack, सीधा missile drop कर दीजिए from a satellite. That was basically the strategic defense initiative of Ronald Reagan of US president 1970s, known as Star Wars. तो जो weaponization और militarization of space है वो नया idea नहीं है. It has been in existence for a long time. But nonetheless, ये बात आगे बनी नहीं क्योंकि उस समय में we did not have that much of technology. So that was it. Recently it has become a hot topic of debate. उसी की बात हो रही है. Background is clear. What is this war? Basically, if you see the reason behind weaponization of war, of course, voice issue. Is my voice not clear? कोई issue क्या आ रहा है issue रोहित? What is the issue? अच्छा रोहित, it may be okay, cool. आउटर स्पेस सिटी 1960 की है, भी करते हैं, वो भी आएगी. तो बेसिकली देखिए, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस. वेपनाइजेशन स्पेस डिजायर टू अचीव स्पेस सुप्रीमेसी. ऑब्वियसली बात है, देखिए वी आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. जो आपने सुना होगा मार्स, वी आर ट्राइंग टू कॉलोनाइज द मार्स, मींस ह्यूमैनिटी इज ट्राइंग टू रीच टू द मार्स. पर्पस, करंटली ह्यूमैनिटी जो है, इंसान जो है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे है. ह्यूमैनिटी इज ऑन अर्थ ओनली.
If anything happens with this planet, we will be lost. We can be extinct like dinosaur. So if we will be able to reach on Mars, then human will become interplanetary species. The chances that the humanity will ever extinct in this entire universe or all the galaxies what we have, it will be near to zero. The day we will become interplanetary species. So इसलिए एक space supremacy. So every country wants to reach first because the earlier you reach at a place that आपके case में, the earlier you start preparation, the more time you have to achieve your goal. Similarly, who starts the first comes the first वाली बात. So everyone is running after colonizing the space, capturing the lack of faith in space peace treaties. There are some treaties which are meant to keep the space full of peace. मतलब space का कोई भी आर्म इस्तेमाल नहीं करना है. You have to keep it as a zone of peace. एक treaty हम अभी थोड़ी देर में करेंगे. To involve, हाँ ये भी कह सकते हैं. बट अच्छा रहेगा. They will lead to Mars और मे भी हो सकता है. मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर में प्रेडिक्ट करता हूँ व्हाट विल हैपन. द डे वी विल रीच टू मार्स, तो मार्स को हम कॉलोनाइज करेंगे. ओवर टाइम मार्स विल बी एज पॉपुलेटेड एज अर्थ. तो मार्स एक अलग कंट्री बन जाएगा. ऐसे ही होता है दुनिया में. दिस इज हाउ कॉलोनाइजेशन वर्क. द मार्स, दे विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ मार्स, एक सेपरेट गवर्नमेंट हो. इसे ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल अमेरिका. अमेरिका वाज अ कॉन्टिनेंट अनएक्सप्लोर्ड. नहीं अभी आई बिलीव ये आपके टाइम में हमारे टाइम में हो जाएगा. अभी करेंगे आदित्य. We will do all dimensions. Don't worry about that. I have high hopes within 20 to 30 years we will be able to reach take humans to Mars. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. By the time you will be old हो जाएगा. ये चांसेस अलग है कि आपको जाने को ना मिले, वो एक अलग बात. चलिए anyway, so that will be the future. That how happened with America. America में all the people came. America was an unexplored land. All the European country went to America, developed there. America बन गया एक नया देश. There are chances that Mars may become another country, but nonetheless humanity survive कर जाएगी. That is the main point. ठीक है. तो पहला space supremacy, every country is running toward the space as a capturing Mars, capturing Moon, capturing other planets. ठीक है. Lack of faith in space treaty, one of the treaty हम करेंगे थोड़ी देर में. It involves a degree of spontaneity and element of surprise. ये तो obviously बात है. Warfare में surprise के अलावा कुछ नहीं होता. If you are the first person to attack is basically the best defense वाली बात. Gain in relatively military advantage. Obviously, बात है, if you reach to the Mars first, you can weaponize Mars before anyone comes in. Then you can regulate who will come to the Mars. So these are some desires everyone is having. अभी शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने आपको बता दिया 1960s 70s में starts the strategic defense initiative US का. Recent में during Donald Trump, he was the former president of USA. अभी बाइडन है, उससे पहले. He space force. जैसे हमारे पास आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, इसी तरह से यूएस हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ स्पेशल ब्रांच ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नोन एज स्पेस फोर्स. वो पहले ही बना चुके हैं. अभी अब देखेंगे इंडिया का स्टैंड है, थोड़ी देर में देखेंगे. ठीक है. तो वो अलग रीजन है रोहित. वो कुछ थोड़ा वो एक्चुअली ही इज अ कलरफुल पर्सन. तो अमीर लोग कलरफुल होते हैं. तो कुछ है. देयर वर सम प्रोस्टिट्यूट वगैरह थी, उनका पैसे वैसे का सीन था. एंड सम सीक्रेट लीकिंग, मतलब डिफरेंट रीजन है. ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रीजंस है, बट नॉनदलेस दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर अस. इसके लिए आप वीडियो देखिएगा और आपको आइडिया लग जाएगा. क्या हमें देखिए न्यूज़ में बहुत कुछ आता है. हमें कोई मतलब नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अरेस्ट किया गया. हमारे काम का नहीं है. यूपीएससी पूछने वाली नहीं है. हमारे काम का नहीं है. तो व्हाई शुड वी वेस्ट आवर मेमोरी सर. हमें फोकस रहना है ओनली द कंटेंट वी नीड. इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज एज सून एज दिस क्लास एंड वीडियो कंपल्सरी देख लीजिएगा. मेक नोट्स आउट ऑफ इट. ठीक है. अब आते हैं इंडिया के एफर्ट्स. So what are India's efforts on this? India's efforts in weaponization of space. So India has already conducted anti-satellite ASAT weapon test. What is this? मिशन शक्ति इंडिया ने कंडक्ट किया था, जिसके तहत वी लॉन्च अ मिसाइल एंड दैट शॉट डाउन अ सैटेलाइट इन द स्पेस. हमारी सैटेलाइट थी. वी शॉट डाउन आवर ओन सैटेलाइट एज अ टेस्टिंग टू सी कि हम कर सकते हैं नहीं. तो वी हैव डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी. अब कोई भी देश अगर सैटेलाइट में कोई वेपन रखता है, तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी, दैट इज योर एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्टिंग जो हमने करी थी मिशन शक्ति. With that, India is among the only 4 countries in the world: US, Russia, China, and now India.
there are only 4 countries in the world that can shoot down a satellite. ठीक है, they can shoot down a satellite. One of that is us. ठीक है, this is India's efforts in space military capability. पहला. दूसरा, we have already developed GSAT system. It's a complex navigation, complex communication system. GSAT satellite और communication heavy satellites. हमने इन्हें भी डेवलप कर दिया है. We have a large constellation of communication satellite जिसकी वजह से we can carry out secure military communication. तीसरा, नाविक नेविगेशन सिस्टम. आई होप आप लोगों ने जीपीएस को सुना ही होगा. द जीपीएस दैट यू यूज इन मोबाइल फोन, जो आपका गूगल मैप वगैरह में आप इस्तेमाल करते हैं. जीपीएस मींस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ये अमेरिका का है, ये यूएस का बनाया हुआ है. इसी तरह से हर कंट्री का अपना, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूएस का जो है, इसका पूरा नाम है नेवस्टार जीपीएस. तो जीपीएस का अर्थ है नेवस्टार नहीं. नेवस्टार जीपीएस इज द यूएस. इसके अलावा ग्लोनास. ग्लोनास इज द नेविगेशन सिस्टम ऑफ रशिया. के अलावा डू समथिंग करके नाम है, स्पेलिंग ऐसी कुछ है जो भी है, वो आपका है चाइना का. जैसे गैलीलियो यूरोप का. तो बहुत लोगों का है. हमने भी अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है नाविक. इसका एडवांटेज समझिए. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन, व्हेन ही वाज रनिंग टू हिज हाइड आउट, उसका जो हाइड आउट था, जब वो वहां पे जा रहा था, तो ही यूज्ड जीपीएस नेविगेशन टू रीच इट. जीपीएस यूएस का है, यूएस कंट्रोल करता है जीपीएस को. यूएस कैन नो वेयर यू आर गोइंग, व्हेन यू आर गोइंग, सब कुछ उसको पता होता है. The US manipulated the data of GPS and Saddam Hussein never reached to his height. but पकड़ा गया. That's how. That's why GPS free है. Because US gets a lot of data out of it. तो इस्तेमाल करता है कॉमन सेंस. इसीलिए हमने बनाया नाविक, क्योंकि पहले हमारे पास नेविगेशन सिस्टम था ना. तो वी हैड ओनली ऑप्शन, तो या तो हम जीपीएस का इस्तेमाल करते या ग्लोनास. अब प्रॉब्लम ये मान लेते हैं वी आर एट अ वॉर विद यूएस. तो यूएस की वॉर में, एंड इफ आवर मिसाइल्स आर यूजिंग जीपीएस, तो यूएस जीपीएस के कोऑर्डिनेट को मैनिपुलेट कर सकता है. आवर मिसाइल विल नेवर हिट द टारगेट. तो हमने उसके लिए गेम खेला. हमने क्या करा, वी सेट आवर मिसाइल विद बोथ सिस्टम. हमने उसमें ग्लोनास भी लगा दिया और जीपीएस भी लगा दिया. तो इसका मतलब अगर हमें यूएस के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, हम ग्लोनास का इस्तेमाल कर लेंगे. अगर हमें रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, हम जीपीएस का इस्तेमाल कर लेंगे. It was a good way, but it was a temporary solution. Now we have our own navigation system, Navic. और एक फर्क याद रखिएगा, it is just a regional navigation, global नहीं. It provides navigation up to 1500 kilometers from India's border. Within India और इंडिया के borders पे 1500 किलोमीटर तक navigation देता है, उसके beyond नहीं देता. We do not have that function. GPS, GPS, GLONASS, ये global navigation system. They cover entire अर्थ. हमारा नेविगेशन सिर्फ और सिर्फ रीजनल है. ये डिफरेंस है, बस याद रखियो. ओवर टाइम हमारा भी ग्लोबल हो जाएगा, टाइम लगेगा. तीसरा एफर्ट जो हमने किया है वो है, वी हैव क्रिएटेड डिफेंस स्पेस एजेंसी. ये तीसरा एफर्ट. So these are India's effort in the war, in the militarization of space. Our ASAT mission that gives us capability to shoot down missile satellite, DSAT military communication satellite, Navic navigation system, and defense space agency, a specialized agency within the क्या बोलते हैं, within armed forces for defense purposes. ठीक है. अब आते हैं what is the world issue. अब मैंने आपको इशू बता दिया, बैकग्राउंड हो गया इंडिया एफर्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट what is the real thing is there. Outer space treaty. ये आपको याद रखना है. Outer space treaty was signed in 1967 between US, UK, Russia. उस समय की सुपर पावर थी. But later on, all nations have agreed. Right now, every single country which is a member of United Nations, for the new student, United Nations is a body where all nations sits. दुनिया में जितने देश हैं, they all go to a supranational body. वहाँ पे जाके they discuss and debate and they arrive at the conventions or treaties at the level of world. उसको हम बोलते हैं United Nations. So please keep in mind, UN is not a world government. It is just a supranational body. Clear everyone? ठीक है. The new student रोहित कौन था? You people are clear? चलिए थोड़ा आगे मूव करते हैं. Please keep this in mind. It is called as Constitution of the Outer Space. It is known as Constitution of the Outer Space. Similarly, we have Constitution of the High Seas. किसी को याद है उसका नाम? Yes. UN clause.
United Nations Convention on the Law of Seas. It is known as the Constitution of the High Seas because under this, up to 200 nautical miles from the border, 200 nautical miles is in the ocean. That is your exclusive economic zone. इसके बाद का जो जोन होता है, UN कैन पनिश them. अब उसमें रोहित आईआर में यूएन प्रॉपर्ली पढ़ाया जाता है. यूएन में बहुत ड्रामे हैं. देयर आर लॉट ऑफ ड्रामास विद इन द यूएन, बट इफ यू डू नॉट फॉलो द यूएन देन ऑफ कोर्स यूएन कैन पनिश यू. बट उसमें बहुत ड्रामे हैं, खासकर कंट्री लाइक यूएस, रशिया, दे कैन नॉट बी पनिश्ड बाय यूएन. वो सिस्टम अलग तरीके से बनाया गया. क्लियर दिस मच? So please keep this in mind. Outer space treaty that governs the outer space, also known as the Constitution of the Outer Space. What are the provisions? Most important provision. No country can place any weapon of mass destruction or perform any military maneuver. So no country can place weapon of mass destruction or perform military maneuver in the space. Point number one, important point number one. Next, point number two. No government can claim any celestial body. मतलब if America reaches to Mars first, अगर अमेरिका मार्स पे पहले पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन कैन क्लेम मार्स. नो, इट विल नॉट हैपन. Because outer space treaty prohibits any government from claiming any celestial body, and exploration of the outer space shall be done for benefit of all countries. Basically, space is free for exploration. Space किसी की प्रॉपर्टी नहीं है. No country can claim any outer space. No country can claim any celestial body. They are free for everyone, free to explore, free to join. Third point, the countries are fully liable and fully responsible for any damage caused by their space object. अगर आप स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और आपके कारण कोई भी डैमेज होता है, then you are completely liable. These are the three provisions. तो अगर प्रोविजन अच्छे तो इशू कहाँ आता है? इशू ये है. हाँ, आ रहे हैं बट इश्यूज में आ रहे हैं. प्राइवेट अथॉरिटी इश्यूज में. तो व्हाट आर द चैलेंजेस? पहला चैलेंज ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्री व्हिच क्लेम ओनरशिप ऑन द सेगमेंट ऑफ ऑर्बिट सिचुएटेड डायरेक्टली अबव द लैंड. यूजुअली क्या होता है, मान लेते हैं ये इंडिया है, तो द एयर above the land, the atmosphere above the land of India is India's property, known as airspace. हम बोलते हैं airspace. Every country's airspace is their sovereign property. Means any plane it enters into airspace, they take permission from the Indian authorities. If they do not take permission, then what will happen? There are air traffic controls around the country. There are air traffic controls. They will try to communicate with the plane कि भाई why you entered into Indian territory without permission. अगर response नहीं आता, the ATC will inform the Air Force कि ऐसा कोई plane आया है and they are not responding. हमें नहीं पता वो किस लिए आ रहा है. And Air Force will dispatch their fighter planes to that plane. तो वो fighter plane वहाँ पहुँच के उससे communication establish करेंगे to know why that plane is there. अगर वो respond नहीं करता, then the fighter plane can shoot it down if required. This is how you ensure India's airspace. ऐसी हर कंट्री का होता है. Every country's airspace is their sovereign property. लेकिन airspace के ऊपर the outer space that you have, you cannot claim. कुछ कंट्री ने कोशिश करी थी क्लेम करने की, पर किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा. पहली बात. दूसरा इशू भी है with respect to ballistic missiles. Science and tech में आप पढ़ेंगे there are certain kind of missiles. जैसे usually we know missiles. एक होता है रॉकेट, एक होता है ballistic missiles और एक होता है क्रूज मिसाइल. डिटेल में you will study in science and tech. So what are rockets? Rocket means it's a kind of projectile, a kind of a system that's uncontrolled throughout the territory. मतलब एक बार आपने रॉकेट छोड़ दिया तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो कहाँ जाएगा. जब तक आपने छोड़ा नहीं है, you can point it to somewhere. Once you fire it, you cannot control its direction anymore. अगर वो टारगेट मूव कर गया अपनी लोकेशन से तो आपका रॉकेट बेकार हो गया. ठीक है. बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, दे आर पार्शियली कंट्रोल.
मीन्स मान लेते हैं ये इंडिया है, यहाँ पे जापान है, तो what we will do, a ballistic missile will go from here, from India's airspace, then it will travel in the outer space, and again it will enter into the airspace and will hit Japan. ये मान लेते हैं ऐसे। तो ये जो ट्रैवल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, that travel ballistic missile carry out in outer space, एग्जांपल जैसे अग्नि 5, इंडिया की जो अग्नि 5 अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, दे ऑल आर ballistic missiles। अब 1967 में ballistic missiles नहीं थी, उस समय इसलिए हमने टीटी में इंक्लूड नहीं किया। अब ये एक ग्रे एरिया है, किसी को नहीं पता बैलिस्टिक मिसाइल कवर होंगी नहीं होंगी, बिकॉज़ रिमेंबर द प्रोविजन ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है यू कैन नॉट प्लेस एनी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन स्पेस, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है दे आर न्यूक्लियर कैपेबल, जैसे अग्नि 5 कैन टेक न्यूक्लियर वेपन्स विद इट, तो इट इज ट्रैवलिंग इन द आउटर स्पेस, सो दैट इज वन ग्रे। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अच्छा ये तो बताया नहीं मैंने, क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड, जब तक वो टारगेट पे हिट नहीं करती आप उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मुझे एग्जांपल बता सकता है क्रूज मिसाइल का इंडिया में जो बनी है? बैलिस्टिक का मैंने आपको बता दिया, अग्नि 5। क्रूज सबको समझ में आ रहा है? क्रूज मिसाइल जिसकी आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते थे, सेकंड यू फायर टिल द टाइम इट हिट द टारगेट यू कैन कंट्रोल इट बाय रिमोट, कहां जाना है कहां नहीं जाना। दीस आर कॉल्ड क्रूज मिसाइल्स। यस, ब्रह्मोस इज द एग्जांपल। BrahMos, which we have made along with Russia as an example. Another example is Nirbhaya. Nirbhaya missiles are also cruise missiles. They are two examples of cruise missiles. ठीक है? फिर तीन तरह की मिसाइल्स होती है, साइंस एंड टेक में पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट that will answer your thing number. It focuses on country only. The private company are not part of it. मीन्स द आउटर स्पेस ट्रीटी, उस समय किसी ने सोचा नहीं था ना कि प्राइवेट कंपनियां भी आउटर स्पेस में जा सकती है, बिकॉज़ आउटर स्पेस में जाना वाज अ कॉस्टली अफेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नोबडी हैड इमेजिन कि प्राइवेट कंपनी वुड हैव द टेक्नोलॉजी। आज के समय में आपके पास स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी, इलॉन मस्क की जो प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स, दैट हैज गुड रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल एंड ऑल, so that has good delivery mechanisms, and he is also planning some manned mission to Mars and all. So this is the problem with this is another loophole in the treaty. That this treaty focus only on countries, not on private bodies. India भी push कर रहा है. India is also pushing its private companies to go for space exploration. ठीक है? आपने से सुना भी होगा, there are a lot of private company which are offering land on moon. सुना भी हो आपने? There are a lot of private company which are offering land on moon. इसलिए ऑफर कर रही हैं। यस, ये यूएन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आदित्य, इट इज अ सेपरेट ट्रीटी साइन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन। यूएन में जितनी कंट्री मेंबर उन्होंने साइन की है। ऑफ कोर्स वी कैन अमेंड यूएन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू अमेंड यूएन कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव टू अमेंड। द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट्स बेसिकली एन एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स, अ बेसिक एग्रीमेंट। मान लेते हैं आप 7 लोग साथ में आए, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी 22 पीपल कैन मेक अ ग्रुप। हमने एक ग्रुप बना लिया एंड वी क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल डिक्टेट कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। में बोलते हैं इट्स अ बेसिक एग्रीमेंट अग्रीड बाय ऑल द पीपल इन दैट टेरिटरी। तो यूएन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल लूज रेलेवेंस। 1945 में वो एग्रीमेंट हमने साइन किया, here in 2023 we have to amend it। उसका प्रोसीजर होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं करेंगे, वो आपका आईआर जो भी पढ़ाएगा वो करवा देगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी को किसी तरह की? नहीं है ना? ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द ट्रीटी प्रोहिबिट्स ओनली वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नॉट ऑर्डिनरी वेपन। These are the four loophole with the treaty। पहला loophole, there are a lot of countries which are trying to undermine the treaty। दूसरा, डार्ट मिशन को वो भी नासा का जो प्रोग्राम था, दैट एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट जो था नासा का, यस, वो अब वेपनाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर यूज्ड बेसिकली टू प्रोटेक्ट अर्थ। अब कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, जैसे डायनासोर्स के टाइम पे हुआ था, ऐसे डार्ट केवल नासा का नहीं, और भी प्रोग्राम है आपके पास, अर्थ डिफेंस सिस्टम भी है बहुत।
यूरोपियन यूनियन का प्रॉपर डिफेंस सिस्टम अर्थ के लिए, कोई एस्ट्रॉइड वगैरह अर्थ की तरफ आता है, जैसे डायनासोर को इसने टेस्टिंग कर दिया, ऐसा कोई अर्थ की तरफ आता है तो हमारे पास प्रॉपर डिफेंस सिस्टम है, हम न्यूक्लियर वेपन वगैरह से उड़ा सकते हैं, डैमेज तो फिर भी कर ही जाएगा। क्लियर, ये किसी को, क्योंकि वेपनाइजेशन नहीं है, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, और ये तो किसी को भी अलाउड है, कोई भी देश अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। Anyway, so these are some loopholes that you have in PT. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? We need OST 2.2. अब टाइम आ गया है कि we should have a new TT of outer space. Should cover ballistic missile, private companies and all the other issues which are not covered in the original TT. तो 1967 की है, बहुत पुरानी TT है, उस समय में बहुत अलग टेक्नोलॉजी थी, आज बहुत अलग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा? We understood what is going in military, space militarization. We understood India's effort in that. We understood our treaty that governs outer space, and then we understood some problem with the treaty. India's role मैंने आपको बता ही दिया था, पीएम मुद्रा करेंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर एवरीवन? दिस वाज द न्यूज़ नंबर 1। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। Previous news was a blend of internal security and science and technology. अभी करते हैं रोहित, मुद्रा योजना में एमएफआई का रोल आता है। लेट्स अंडरस्टैंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके बाद थोड़ा सा यू नीड टू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की इकोनॉमी देखें तो वी हैव अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर माने एनी सेक्टर दैट डील्स विद रॉ मटेरियल, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी है सारे प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, a sector that takes material from the primary sector and make product out of it is secondary, like manufacturing. Tertiary sector are services, जैसे for example मैं जो काम कर रहा हूँ इसे tertiary sector, service space. When you go to a restaurant, कोई आपको डिलीवरी जो आपको सर्व करता है, services, you call to a BPO call center, you take Netflix subscription, इस तरह की जो चीजें they are services based चीजें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अंडरस्टैंड दिस, टर्शियरी सेक्टर इज द हाईएस्ट पेइंग सेक्टर। यहाँ जो जॉब्स होती है, दे आर द हाईएस्ट पेइंग जॉब। लैक्स ऑफ सैलरी इज वेरी कॉमन इन टर्शियरी सेक्टर, लैक्स ऑफ पर मंथ इज अ वेरी कॉमन सैलरी। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब, पर एक प्रॉब्लम है, इट इज द लीस्ट एम्प्लॉयबल। व्हाई? इट इज द हाईएस्ट पेइंग सैलरी बट लीस्ट एम्प्लॉयबल बिकॉज दे आर हाईली स्किल्ड जॉब्स। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज होती है, दे आर हाईली स्किल्ड सेक्टर, हर कोई नहीं कर सकता सर्विसेज को। Services are very skilled and you require less number of people in services. The largest employer in the world is your secondary sector, that is manufacturing. Manufacturing is always the largest employer. अब इंडिया के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इंडिया की इकोनॉमी को आप देखिए, इंडिया में the primary sector of India, agriculture, allied activities, mining and all, it is the least contributor to India's GDP. उसी पे आराम देते हैं। India's primary sector contributes the least to India's GDP, but it has the highest employment. Around 75% of India's population drive their income directly, indirectly from primary. Next, secondary. Secondary sector is the intermediate, but it is in between primary and tertiary in terms of contribution to GDP. इंडिया की ग्रोथ में सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का मॉडरेट कंट्रीब्यूशन है एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। टर्शियरी सेक्टर इज द लीस्ट एम्प्लॉयर, सबसे कम एम्प्लॉयमेंट टर्शियरी सेक्टर में होती है, बट मैंने बोला कि दे आर हाईली स्किल्ड जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स, सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर के होते हैं। सर्विसेज हाईली पेड बट लेस नंबर ऑफ जॉब्स। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंडिया जंप्ड फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी, दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडिया। इंडिया इकोनॉमी यूजुअली क्या होता है, यू मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, बट इंडिया में इंडिया's economy jumped from primary to tertiary. This is the reason India is the fifth largest economy in the world. India is the fifth largest economy in the world, but yet we are the world poverty capital.
ये रीजन है, और भी रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज आपको समझ में आया? इंडिया में टर्शियरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी, बट इट इज द लीस्ट एम्प्लॉयबल सेक्टर. दैट इज व्हाई इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जीडीपी बेसिस में. स्टिल वी आर द वर्ल्ड पॉवर्टी कैप, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज आल्सो नोन एज ग्लोबल बैकऑफ. क्लियर एवरीवन? यहां तक बताइए, कोई कंफ्यूजन? You got the answer to your question? नहीं रोहित, जब आप इकोनॉमिक्स करेंगे आपको पता लगेगा बहुत रीजन. पॉपुलेशन इज नॉट द प्राइमरी. हम्म. एलपीजी एक रीजन है बहुत बड़ा. अरे कोई नहीं, वो तो जब इकोनॉमिक्स करेंगे तब समझेंगे. फिलहाल हम थोड़ा बहुत वी आर जस्ट हैविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू. अब आते हैं सेकेंडरी में. देखिए सेकेंडरी में द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज एमएसएमई. एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. जैसे छोटी मोटी आपकी किराना शॉप हो गया, यू हैव अ स्मॉल फैक्ट्री, ठीक है, यू हैव अ बिग बिग फैक्ट्री. बदल गया होगा मेरे ख्याल में, प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट में बता रहा हूँ. इस ईयर हो सकता है नाइजीरिया हो गया, बट वी आर अमंग द टॉप हंगर पीपल. हाँ हो सकता है बदल गया हो. लास्ट मुझे याद है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के हिसाब से, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, हो सकता है बदल गया हो. वर्ल्ड. हाँ ठीक है, उसमें स्विच आ गया था. हाँ हाँ बदलता रहता है. मतलब बेसिक लॉजिक क्या है देखिए. यस मैंने भी चेक किया. यस इंडिया हैज जंप नाउ, बट nonetheless keep this in mind. Why there is a difference? मैं ये बता रहा हूँ, you are the fifth largest economy, still you have the largest amount of poor people. हंगर इंडेक्स में आपकी स्थिति बहुत बुरी है. पॉवर्टी इंडेक्स में आपकी स्थिति बहुत बुरी है. डेमोक्रेसी इंडेक्स में आप बहुत बुरे हैं. प्रेस फ्रीडम में आप बहुत बुरे हैं. हर चीज में आप बहुत बुरे हैं. ऑल सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 इयर्स इन इंडिया, इंडिया में न्यूट्रिशन घटा है. हाँ इसका इसका रीजन, एक रीजन ये है टर्शरी सेक्टर. बहुत रीजन है, अब इकोनॉमी में डिटेल में जाना पड़ेगा, बट वन ऑफ द रीजन इज इंडिया में टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी, दैट इट इज द लीस्ट एम्प्लॉयबल सेक्टर. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च व्हाट मेक इन इंडिया प्रोग्राम. मेक इन इंडिया का रीजन था वो यही. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया प्रोग्राम बिकॉज़ गवर्नमेंट समझती है boosting the secondary sector is the direct or the surest way to bring India out of poverty. As the government understand, Make in India launch हुआ था, इसमें बहुत इशू बात है. Monetary component of Make in India is प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. अब ये क्या करता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एक गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट डेटा पब्लिश किया है, under this government has distributed 23 lakh crore rupees to 40 crore beneficiaries. Government of India के मुताबिक it has distributed 23 lakh crore rupees to 40 crore beneficiaries since the launch of the scheme, which I believe is a good measure. ठीक है, but again उसके अलावा बहुत रीजन है इंडिया में पॉवर्टी के, वो अलग से. कंक्लूजन तो बताइए. Is it clear to everyone? Any confusion so far? मेजोरिटी लोग इशू है. चलिए तो ठीक है, देखते हैं इसमें, देखते हैं क्या है.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आइडिया अच्छा था, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन द आइडिया वाज नाइस टू गिव मनी टू द पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ हल्का फुल्का स्मॉल बिजनेस, तो आइडिया अच्छा था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अंडर दिस गवर्नमेंट प्रोवाइड अप टू लोन अप टू 10 लाख रुपीस टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो। प्रीलिम्स के लिए इसे याद रखिएगा, नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, प्लीज रिमेंबर दिस, अप टू 10 lakh rupees. And how you can get the loan? You can get the loan from commercial bank. What are commercial bank? These are the banks which are commercial bank which are registered with RBI. Commercial bank क्या होता है? These are registered with RBI. RRB, RRBs means regional rural bank. अब इन्हें क्यों बनाया गया? Because देखिए जो commercial bank है like PNB, SBI, this and that. Think about बैंक को, I think regional rural नहीं रही है। ग्रामीण बैंक को प्रॉपर लाइसेंस मिल गया था प्रॉपर बैंकिंग का। अच्छा, आप कहीं ग्रामीण बैंक आप इसे कन्वर्ट करके कह रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है। ग्रामीण एक बैंक टाइप भी है। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा था, मुझे लगा आप ग्रामीण बैंक जो नाम है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, नाम में कंफ्यूजन थी। हाँ, ग्रामीण बैंक की बात, रीजनल रूरल बैंक्स ये कैसे बनाएगी? दे आर मेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास अ लॉ, RRB Act. Under that, Grameen banks or the regional rural banks are made. They are primarily owned by government. Purpose समझिए इसका। देखिए, what used to happen is before this banking system, you go to a local sahukar or the local money lenders. They give you loan at, for example, 10% interest rate, 5%, 10%. So what happens? They give you a costly loan, and they intentionally do not give you true knowledge. So what happens? You take a loan from them, and over time, your interest on loan is more than the loan itself. तो इसके बाद क्या होगा ना? They would say, give me your, एक टर्म हम बोलते हैं हिंदी में, जब जोरू जमीन, that is give back my money, give your wife or give me the land. Of course, पहले ये काफी लिया जाता था, पर आज जमीन है, वाइफ को नहीं देता जमीन। So what happens is you have to give up your land. If you lose your land, इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा we should increase the penetration of banking. That's why these were created. They are dedicated bank for rural purposes. यहाँ तक clear overview? पर अपनी बीवी की बात नहीं हो रही, दूसरे की बीवी की बात हो रही है। सुनानी आपने दूसरी की बीवी और अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। So commercial bank, please keep this in mind. Commercial bank, RRBs हो गया। Small finance bank is a new type of bank, recent में बनाई गई है। इसका पर्पस होता है to give small finance। MFI, आप में से जिसने भी पूछा था, MFI का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब any bank that provide micro finances, any kind of bank that provide micro finances are known as micro financial institutions। इसके अलावा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये क्या होता है? NBFCs are proper companies, companies जैसे आपकी private companies। NBFCs are company which Paytm, GPay, NBFCs, yes, NBFCs are the proper companies. They are registered under Companies Act, but they act like banking institutions. They are not bank, but they act like a bank. They are known as NBFCs, non-banking financial companies. There are numerous variety of banking financial companies. जैसे कुछ एग्जांपल अपना पेटीएम, जी पे बहुत है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी, लोन एनबीएफसी, बहुत तरह के एनबीएफसी। सबको क्लियर है व्हाट इज एनबीएफसी? स्पेशली द न्यू गाइस, यू पीपल कुड अंडरस्टैंड दिस। आई नो आपका बेसिस वगैरह भी हुआ नहीं होगा।
ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड अ लोन अप टू 10 लाख रुपीस टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। सेकंड थिंग, the loan can be taken from commercial bank, RRBs, small finance bank and MFI and and types of loan within Mudra scheme. तीन लोन होते हैं आपके पास, शिशु which is up to 50,000, किशोर which is 50,000 to 5 lakh, तरु 5 lakh to 10 lakh. आपको मेजॉरिटी ऑफ द लोन आपके यही खत्म हो जाते हैं, लाखों में किसी को नहीं मिलता, मेजॉरिटी होगा सेकंड कंप्यूटर, बहुत कम लोग होंगे जिनको लाखों में मिलता हो, बट नॉनदलेस दीज आर द थ्री कैटेगरीज। परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई थी, इट इज परफॉर्मिंग कंपैरेटिवली गुड। That is 23 lakh crore has been distributed over 40 crore beneficiaries. The good amount. कि हमारी 120 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ लोगों को आप लोन दे रहे हो। Team 11 challenges. What are the challenges to the scheme? These challenges are available to every government scheme. पहला, lack of awareness. A lot of people who are unaware about this scheme. Limited coverage. Despite the scheme broad coverage, it has been challenging in reaching out to all eligible beneficiaries, खासकर remote rural areas में। तो पहला तो लोगों को पता ही नहीं है, जिन लोगों को पता है उनमें भी लिमिटेड कवरेज है एंड डिफिकल्टी इन मीटिंग टारगेट। गवर्नमेंट ऑलवेज सेट अ हाई टारगेट कि आप इतना लोन दीजिए, इतना लोन दीजिए, बैंक इतना लोन दे नहीं पाता। एमएसएमई स्कीम तो मुद्रा योजना में नहीं होगा ना, वो अलग से होगा, एमएसएमई अलग से होगा। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री कंट्रोल करती है। मुद्रा योजना में नहीं होगा, मुद्रा योजना में गवर्नमेंट की टारगेटेड डेडलाइन है अप टू 10 लाख। एमएसएमई स्कीम में जो आप बोल रहे हैं, दैट कुड बी अ सेपरेट स्कीम ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई को गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट देती है, आपके पास टैक्सेस वगैरह कम होते हैं, आपको लंबे समय तक रिपेमेंट शेड्यूल होता है और भी कई बेनिफिट। एनीवे, डिफिकल्टी इन मीटिंग टारगेट, डिले इन लोन डिसबर्समेंट बिकॉज़ ऑफ लेंथी डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ हाई डिफॉल्ट रेट, ये इंपॉर्टेंट। अब हो गई डिफॉल्ट रेट है, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं दे आर जरूरी नहीं कि चलेंगे चले, बट इसमें क्वेश्चन आता है, इवन इफ देयर इज हाई डिफॉल्ट शुड वी गिव द लोन? Even if there is high default, should we give the loan? Answer is yes, we should. देखिए बैंक का पर्पस क्या होता है? बैंक्स आर नॉट मेंट ओनली टू गिव यू, बैंक्स आर नॉट मेंट ओनली टू गिव यू मनी। हाँ, यस, दे आर आल्सो मेंट टू गिव यू अदर सर्विस। जैसे आरआरबी क्यों बनाया गया? A regional rural bank, a Gramin bank. There will be a literate banking officer there. So when a farmer will go to a bank to take the loan, he will not only get the loan, he will also get other kind of advice. The banker होगा, he will be expert, he will be trained in bank, trained in agriculture. उसे बता सकता है what kind of fertilizer you should borrow, what kind of market you can give. Yes, that is the most important thing. पहली चीज। और दूसरी चीज, लोन चाहे देखिए, इन एन इकोनॉमी इफ पीपल आर नॉट रिटर्निंग बैक द लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन एडजस्ट देम, पर एक लिमिट होती है, लिमिट है, अप टू अ लिमिट लोन डिफॉल्ट्स आर ओके। इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत काम आता है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने बैंकों को नेशनलाइज क्यों किया? इंदिरा गांधी सरकार जो है, शी नेशनलाइज ऑल द बैंक, दे वर प्राइवेट बैंक, शी मेड ऑल बैंक एज गवर्नमेंट बैंक। दैट इज वी कॉल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो आप कह रहे हैं ना अभी, दैट इज पीएसएल, यहाँ नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग बहुत बड़ा है तो बहुत कुछ आता है, बैंकिंग के एटलीस्ट 4 to 5 2 आवर्स क्लास, हम बैंकिंग पूरा नहीं कर रहे, वी आर डूइंग दिस पार्ट ऑफ। ठीक है, तो लोन हमें देना चाहिए, बिकॉज लोन गिविंग से क्या होगा, इट विल नॉट ओनली क्रिएट क्रेडिट। मान लेते हैं आपके सामने 10 आइडियाज, 10 स्टार्टअप with 10 ideas, you must fund all 10 because you have no idea which among these 10 startup can reach to the top. Example, पेटीएम वगैरह स्टार्टिंग में किसी ने लोन दिया होगा, स्टार्टिंग में किसी ने सीड फंड दिया होगा, बिना उसके कैसे आगे बढ़ता? जैसे शार्क टैंक जो आजकल प्रोग्राम चल गया है लोगों को पैसा कमाने का, इस तरीके। एनीवे, क्लियर है सबको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड इश्यूज?
अगला अगली न्यूज करते हैं कंपटीशन बिल 2023। मैंने स्टार्टिंग देखा नहीं है, क्या था बेली बटन बिजनेस? नीड बिजनेसमैन। I have not. ओके, अच्छा, ऐसा कमाल है, ऐसे भी business। अच्छा, cool। हाँ, I also watched सत्ता साथ में, बहुत अच्छा लगा मुझे। I like the competition bill 2023। उसमें उसका रोल भी ठीक था, वो जो लड़की थी। That was also good। The competition commission bill 20 competition commission bill 2023। What about it? देखिए, पहला हमें समझना पड़ेगा इसके लिए मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी इज इकोनॉमी दैट रन्स ऑन डिमांड। कोई कंट्रोल नहीं करता मार्केट इकोनॉमी को, नोबडी डिक्टेट्स मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे प्राइसेस आर डिटरमाइंड। एवरीथिंग इज दिस। उसके बेसिस पे प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, उसके बेसिस पे सिस्टम इज डिटरमाइंड। दैट इज मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी में व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन, इसी को तो ये ध्यान रख, somebody has to be a kind of empire there। That is your competition commission of India, CCI। CCI is the empire there। अब मुझसे आप ये मत पूछना व्हाट दिस एम्पायर वाज डूइंग ड्यूरिंग जियो रिवॉल्यूशन। मुझे नहीं पता है क्या कर रहा था उसको। बट नॉनदलेस मार्केट इकोनॉमी में इट इज नेसेसरी। एग्जांपल समझाता हूँ आपको टेलीकॉम रिवॉल्यूशन का। टेलीकॉम में जब व्हेन जियो केम इन, बिफोर दैट टेलीकॉम में जियो केम इन, बिफोर दैट देयर यूज्ड टू बी 10 to 12 कंपनीज इन इंडिया। और इतना बढ़िया था कि यू नेवर यूज्ड टू रिचार्ज। आपको, मुझे नहीं पता आप में से कितनों का आइडिया है। बिफोर जियो यू नेवर यूज्ड टू रिचार्ज योर फोन, इनकमिंग वाज फॉरएवर फ्री। अब क्या होता है, मंथली रिचार्ज इज कंपल्सरी। पहले नहीं था। यू कुड यूज योर सिम एज मच एज कॉल, एंड हर कोई अपना मिस कॉल से काम चलाता था। हाँ, मिस कॉल से काम। दैट वाज सम गुड डेज। अब ठीक है, हमने मजाक में बोला, बट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ जियो कम्स इन। जियो ऑफर्ड एवरीथिंग फॉर फ्री, इंटरनेट फ्री, कॉल फ्री, डेटा फ्री, ये फ्री, वो फ्री। एंड everyone switched from these company to Jio to employ to use the free material। नुकसान इसका क्या हुआ? What was the disadvantage? Yes, created a kind of monopoly, and it was an unfair trade practice। What is unfair trade practice? Any practice in which you are selling a commodity less than the cost। मुझे कोई commodity पड़ी 10 रुपए की, मैं 2 रुपए की बेच रहा हूँ। The unfair trade practice, because I'm intentionally selling it so low that all my competition die। ये नहीं होना चाहिए था। बिकॉज ऑफ दिस ऑल कंपनी, टेलीकॉम कंपनी डाइड। अब कितनी कंपनी बची है? सिर्फ 3 कंपनी बची है। एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट जो मोर लेस डेड है, बीएसएनएल। इसमें एक चीज याद रखिएगा, कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था, एग्जिट बाय लिबरल एंड। इकोनॉमिक सर्वे गिव एन आइडिया टू द गवर्नमेंट। नहीं, अभी नहीं हुई है, गवर्नमेंट नहीं हुई है, और सॉरी बीएसएनएल प्राइवेटाइज नहीं हुई है। तो इकोनॉमिक सर्वे गिव एन आइडिया। देखिए, इफ यू हैव अ गवर्नमेंट कंपनी, यू मेक इट प्राइवेट, तो पीपल प्रोटेस्ट। तभी एसबीआई होगी। अगर एसबीआई इज अ गवर्नमेंट बैंक, to make it private, people will protest, because all the people they studied for 1 to 2 years to clear a government bank exam। अब गवर्नमेंट बैंक में लग गया, गवर्नमेंट को प्राइवेट कर दोगे, all the efforts they put in will be waste। उन्होंने किसी रीजन से गवर्नमेंट बैंक ज्वाइन की, गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन की। तो इकोनॉमिक सर्वे said if you privatize a government company, people protest। So what you will do not privatize it। The best way to do the thing is
rather than privatizing the company, stop recruitment. Exit by liberal entry. First, open that sector to everyone. Anyone can come in that sector. Second, stop new recruitment. Then, old people will keep on retiring. New people will not join the company. The people in between, give them VRS. VRS is voluntary retirement service. या जिसने बता दिया, चलिए वो जो भी रीजन अभी देखते हैं हम. That's the myth. मैं पहले बता दूं, that's the myth that private banks will be better. The complete myth. अब बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वरना मैं आपको डिटेल में समझाता कि बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन कितना डेंजरस है. दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज यस. अभी मतलब हम समझ नहीं पा रोहित, इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे ना बैंकिंग सेक्टर, वहां पे बहुत चीजें हैं, अभी बाद में देखेंगे. तो मेन देखिए क्या है. What you do, you stop new recruitment. Old people will keep on retiring. अब जो बीच के बचे, you give them VRS. Imagine करिए, you have 25 years of service left. गवर्नमेंट आपको आके कहती है, take 25 years of salary in advance. और छोड़ दो जॉब. तो आपके लिए तो lucrative है. आप अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे जितना आपको एक साथ मिल जाए. आपके लिए lucrative है, तो you will also try to leave the company. मैंने एक एग्जांपल दिया, VRS पॉलिसी वैरी फॉर कंपनी टू कंपनी. तो बिकॉज ऑफ दिस, अब आपने नई रिक्रूटमेंट करी नहीं, पुराने लोग रिटायर हो रहे हैं, जो बच्चे वो वीआरएस ले रहे हैं. अल्टीमेटली क्या होगा, द गवर्नमेंट कंपनी विल श्रिंक, ओवर टाइम इट विल डाई. दिस इज कॉल्ड एग्जिट बाय लिबरल एंट्री. कीप दिस इन माइंड. बीएसएनएल वाज इंटेंशनली किल्ड. BSNL was intentionally killed so that the private companies can take over. Keep this in mind. Because of this, we have effectively only three companies in this country: Airtel, Voda Idea, and Jio. And it has created a kind of monopolistic environment. It can. I'm saying it can. Government can offer you something. Government बोलेगी लमसम मुझसे 10 करोड़ रुपए ले लो या 1 करोड़ रुपए ले लो, जो भी आपकी हिसाब बनेगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसी सेट. कीप दिस इन माइंड. गवर्नमेंट को फिर भी सस्ता पड़ेगा. गवर्नमेंट को फिर भी सस्ता पड़ेगा. इफ गवर्नमेंट ट्राई टू प्राइवेटाइज दैट कंपनी, यू विल गो टू कोर्ट फी, प्रोटेस्ट, दस एंड दस ड्रामा. It will be much cheaper. Giving you 25 years salary, it will be much cheaper for the government than privatizing for. बहुत सस्ता पड़ेगा ये. हाँ, पे कमीशन भी बहुत रीजन. आप प्रोटेस्ट करोगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, पे कमीशन होगी, न्यूमरस रीजन. तो इट इज चीपर फॉर द गवर्नमेंट. फर्स्ट थिंग. अब देखिए, वी हैव थ्री कंपनी: एयरटेल, वोडा आइडिया, जियो. वोडा आइडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी. अगर वोडा आइडिया चली गई तो आपके पास सिर्फ दो कंपनी होंगी: एयरटेल एंड जियो. इट कैन क्रिएट ड्यूपली. ड्यूपली का मतलब दे कैन फिक्स प्राइसेस इन द मार्केट. आपके पास ऑप्शन नहीं है. वोडाफोन आइडिया कहेगी मिनिमम 200 रुपए का रिचार्ज हर महीने. अब देखिए, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर पीपल लाइक यू एंड मी. थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है पर प्रॉब्लम नहीं है. बट इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो. बट इमेजिन द सिनेरियो, अ रिक्शा पुलर. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, रूरल एरिया से, दे कम टू अर्बन इंडिया टू वर्क. इमेजिन दोस पीपल, उनके पास, they live in urban areas, the only source of mental satisfaction is by calling their relatives. आपकी वाइफ, आपके किड्स, आपके family members all are in a village working on a farm, and you are in urban area working as a laborer or something. The only satisfaction you derive is by calling every day to your family. Mental peace. और एक रिक्शा पुलर जो दिन में मान लेते 800 रुपए कमा रहा है, उसमें 200 रुपए आपका रिचार्ज में लगा देगा, आपकी क्या करेगा? You get my point? Costly. This is the problem. Free incoming थी ना, it was serving the lower class of India, and this is the problem that इंडिया में आज आप देख लीजिए, वर्कर सुसाइड बहुत बढ़ गया है. एवरी डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉर्ड नहीं रखती है सुसाइड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता नहीं है. बट नॉनदलेस सब क्लियर हो रहा है इस एग्जांपल से. इफ देयर इज क्रिएशन ऑफ मोनोपोली और ड्यूपली इन द इकोनॉमी, इट इज डिजास्टर्स फॉर द पीपल. And to prevent such kind of scenario, we created Competition Commission of India in 2002.
ये कैसे होगा? नई कंपनी कैसे आएगी? नई कंपनी आ ही नहीं सकती, दे कैन नॉट कम्पीट विद द ड्यूप्लिस्टिक सिचुएशन। इसमें कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा सिवाय गवर्नमेंट के। The government wants to break this duopoly. The government has to come first. कोई प्राइवेट कंपनी इस ड्यूपली को तोड़ नहीं पाएगी। आपको ड्यूपली तोड़ना मुश्किल है, और मोनोपोली तोड़ना तो और भी मुश्किल होता है। Only the government can break this duopoly now. But nonetheless, अब जो भी है यही है। Do you think this government will break this duopoly? नहीं, because this government is neoliberal. आपको पहले भी समझाया था, this government is purely neoliberal. They are market friendly government. They believe in corporates. हाँ, कुछ दिनों में सिर्फ जियो बचेगा मुझे लगता है। And then आकाश अंबानी नाम है उसका, आनंद अंबानी नाम है। I think he is the CEO or MD of Jio, I believe. Son of Mukesh Ambani. Anand है, okay. इससे एक बात मुझे समझ में आती है, on a lighter note, it doesn't matter how much time you spend on gym, spend time on money, then you will get Radhika Merchant. चलिए आगे बढ़ते हैं। The Competition Bill 2023. वैसे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बैड, वेरी बैड, एथिकली रॉन्ग। On a lighter note, it was तो इसके लिए we have created CCI, CCI 2002 एक्ट के तहत। तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज, कॉपी नहीं मिलेंगे नंबर। अगर आनंद अंबानी गरीब होता ना तो कॉलेज फ्रेंड होता तब भी शादी नहीं होती। कॉलेज फ्रेंड क्या, कॉलेज बॉयफ्रेंड होता तो भी शादी नहीं होती। ठीक है, दैट्स देयर लाइफ जस्ट। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, दे आर रिच, रिच पीपल मैरी रिच, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज रिच। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, रिच पीपल मैरी रिच, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज रिच। चलिए सीसीआई एक्ट की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड रिसेंटली, बेसिकली कॉम्पिटिशन बिल 2023 की फीचर्स, प्रोहिबिशन अमेंडमेंट अच्छी है, इस अमेंडमेंट दैट मोदी गवर्नमेंट ट्राइंग टू ब्रिंग अच्छी है। Prohibition of anti-competitive agreement. The bill prohibits any agreement or conduct that restrict or distort competition in the market. Transaction worth rupees 2000 crore will need CCI approval. तो यार तुम तो बिल्कुल मिसोजिनिस्ट हो गए। अभी लड़कियां हैं क्लास में बोलेंगी कुछ हो, ऐसा नहीं है। ट्रू लव भी कोई नहीं होता, ट्रू लव। लेट्स कम बैक, हो गया काफी मजाक, आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट। The first thing, it will provide prohibition of anti-competitive agreement, means it prohibit any agreement or conduct that restrict or distort competition in the market. Transaction worth rupees 2000 crore will lead to. Second point, prohibition of abuse of dominant position. Example, Google. Google, because it has monopoly over search engines, so it can put any of the service at the top. Most of the people do not go beyond first page. आप सर्च करते हैं फर्स्ट पेज से बाद सेकंड पेज रेयरली कोई खोलता है, थर्ड तो खोलते ही नहीं रही। बहुत रेयर होता है कि थर्ड पेज तक कोई जाए। तो गूगल कैन प्रमोट योर सर्विस इवन इफ इट इज लो क्वालिटी, गूगल कैन पुट इट ऑन द टॉप। That is abuse of dominant position. The second provision is it prohibits any abuse of dominant position by unfair terms and conditions. अब पता नहीं इन्हें अब क्यों याद आ रही है बात। थर्ड, चैट जीपीटी एआई सॉफ्टवेयर है, इतना कुछ जरूरी सब इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी बहुत इस्तेमाल हो रहा है आजकल, यूपीएससी में बहुत इस्तेमाल हो रहा है चैट जीपीटी का टू राइट आर्टिकल्स। The time limit for various institute are now using chat gtp. यूपीएससी इज अलग गेम, इट्स नॉट ओनली अबाउट नेटवर्क।
एआई तो सभी डेवलप कर रहे हैं। चलिए, तो पहला क्लियर है, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेकंड प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, थर्ड टाइम अप्रूवल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 150 डेज, फोर्थ मर्जर कंट्रोल, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया merged together, now any merger and acquisition has significant adverse impact on the competition will require will re- आगे will require pre-notification and approval. Competition Commission of India will approve a merger. जैसे वोडाफोन आइडिया का होता है, which is significant for the economy. Such, such kind of approval will be given by CCI. Fifth point, establishment of regulatory authority. Now the bill provides establishing independent regulatory authority to oversee the competition in the market. Sorry, Abhinav, what you are asking? Merger done by government fully, मतलब ना ना गवर्नमेंट विल, हाँ अच्छा अच्छा वो आप कह सकते हैं, बट आई डोंट थिंक देखिए सीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर गवर्नमेंट डज नॉट पुट फेवरेट देयर तो अब इतना शक करेंगे तो कैसे चलेगा। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन थोड़ा सा बिलीव करके चलते हैं कि गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं है। Consumer protection, it the bill provide for the protection of consumer interests, including prevention of false, misleading advertisement, promotion of fair and transparent pricing. False misleading advertisement, I hope सबने देखी होंगी टीवी पे, फॉर एग्जांपल वो रॉयल ब्लू सीडीज, पान मसाला, these all are trying to promote alcohol and tobacco, but you cannot promote alcohol and tobacco on विमल वगैरह जो भी है, you cannot promote alcohol and tobacco on the TV, so you use false and surrogate advertisement basically. Seventh, advocacy in a way. These are the seven changes that the Competition of Commission Act bill brings. You need to know amendment अच्छी है, amendment is good, but एक चीज हमेशा रखिएगा, it all depends upon governance. It doesn't matter what institution you create. If government appoints their favorite in the institution, तो कितना भी powerful institution हो, that institution will be nothing. That we need to put first condition. You are bringing this amendment, good, but nobody should be uh, it doesn't matter if this is a good amendment, अभी pass नहीं हुई है, it is yet to be passed. Once it is passed, it will do wonders. But governance is very compulsory that the government should not interfere in the function. Right? मुझे समझ नहीं आता when Jio was offering everything for free, CCI क्या कर, तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी उस समय पे कि that this practices will destroy India's telecom sector. It can create the situation of duopoly, right or triply. So I don't know what it was doing there. It was completely unfair trade practices. You were offering everything for free. हाँ हो सकता है, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बिल्कुल है, बट मैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। I'm talking on लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, फॉर एग्जांपल अभिनव फॉर यू, जो जितने लौंडे आजकल लौंडिया बन के घूम रहे हैं इंस्टाग्राम पे, थैंक्स टू जियो। तो एंजल प्रिया के अकाउंट है सारे, थैंक्स टू जियो। टू बी जोक्स असाइड, कहने का मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन, there are a lot of government services which are now provided by through internet. You can apply for exam for UPSC. ये mistake नहीं कहेंगे, अब mistake नहीं है, good. A new company bringing so much things are good, but the way it was done was bad. We are talking about the way. तो समझ में आ रहा है? There are a lot of services now which are provided electronically. आपका telecom service, आपका for example banking services, you can apply, जो भी है, हाँ, that is you can get it. For example, there are a lot of people who can now prepare for UP. आप लोगों को देख लीजिए, you people are available a lot of fiber network use Jio now, because यहाँ पे जियो का नेट है शायद मेरे ख्याल में, सर्वर का है, यहाँ दिख नहीं रहा मुझे किसका नेट है ये, नहीं एयरटेल का है, यहाँ पे एयरटेल का नेट, आप में से आई थिंक काफी लोग जियो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एनीवे, इट इज इंडीड
It is indeed a good thing, but what we are saying, the way it was done, leading to the creation of triply, only three companies in power, and that to one company on verge of collapse. This company duply will be created. That's dangerous. They can control market. ये नहीं होना चाहिए. मैंने आपको ये सारा बता ही दिया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के बाद. अमेंडमेंट मैंने आपको बताया कि नहीं तो चाहिए. ठीक है. कुछ इश्यूज जल्दी से देख लेते हैं. की इश्यूज एंड एनालिसिस. पहला इशू, द एक्विजिशन ऑफ डिजिटल मार्केट. When you are acquiring, for example, you are acquiring a software. अब how would you determine that? Acquiring a software, उसको कैसे determine करें? मान लेते हैं you are acquiring a software company which has no office, nothing. They only have a software product. It's a WhatsApp हो गया. So how you will govern that, whether it is an anti-competitive practice or anti-competitive practice? So the bill proposed that such acquisition on digital market will be based on value of transaction. इसमें we will not see the assets or turnover of the company. We will only see the value of transaction made. उसके basis पे we will determine another 2,000 crore. इसके ऊपर की अगर transaction है, it will be covered by CCI. Second, under the extended power of CCI, it can seek any information and document from legal advice. कंपनी के पास lawyers होते हैं. Those lawyers have confidential information of the company. This will expand the power of PCI, and it can even seek information from legal advice. So it is a violation of lawyer client confidentiality. आपने सुना होगा ना, it is said never hide anything from your lawyer and your doctor. दो लोग होते हैं जिनसे you should not hide anything. And also wife. अगर जिंदा रहना है तो wife भी. Otherwise, legally speaking, only lawyer and doctor. So it will be a violation of lawyer client confidentiality. Clear everyone? पुलिस का क्या लेना है? पुलिस रोहित. अच्छा. नहीं, पुलिस से तो पुलिस वाले खुद छुपाते हैं. वो खुद दारू पी के आते हैं, आपका दारू को चालान काटते हैं. उनको काउंट मत कीजिए. ठीक है. पहला, एक्विजिशन ऑफ डिजिटल मार्केट. सेकंड, एक्सपेंडिंग द पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल सीसीआई टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीगल एडवाइजर्स. थर्ड, द बिल मैंडेट डिपॉजिटिंग 25% ऑफ एनी अमाउंट levied by CCI. ये भी ठीक प्रोविजन है. इट सेज दैट CCI, if impose any penalty, you have to deposit 25% of the amount before you can make an appeal against CCI order. Fourth point, allows the use of intellectual property rights as a defense in case of anti-competitive agreement. The defense is not available in the case involving abuse of dominant. मतलब the bill does not address this gap. तो ये weakness अभी भी रह गई. मतलब intellectual property. Intellectual property is a property. Intellectual property is anything that is out of your intellect. You discovered this pen. You have designed this pen after long research and development. Such kind of property are known as your intellectual property. Initially, you can use intellectual property argument as a defense in anti-competitive agreement. आपने मान लेते हैं वोडाफोन एंड आइडिया एंटर इनटू एग्रीमेंट टू बेसिकली ओवर सम सर्विस. दोनों कहते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि वी विल प्राइस द सर्विस 200. राइट नाउ वोडाफोन आइडिया इज वन कंपनी. मैं मान रहा हूँ कि बोथ आर डिफरेंट कंपनी. So Vodafone Idea enters into agreement that they will price a commodity not less than 200. उसके ऊपर जो उनके समझ में आए. So it is a kind of anti-competitive agreement. But if it involves a commodity which is the intellectual property of the company, then you can use it as a defense. ठीक है? This defense was not available अगर if you are in the dominant position, जैसे Google. अब गूगल ये नहीं कह सकता कि मेरा एल्गोरिथम ऐसा है कि जो वीडियो मैं चाहता हूँ वही ऊपर आती है. ये नहीं चलेगा. It should be naturally done, organically done. If the people are opening a particular site more number of times, that should appear at the top, not the site that pays you the money to appear on the top. ठीक है. तो dominant position पे अप्लाई नहीं होगा. The bill does not address this gap yet.
Clear? So these were the news that I had. Cookies अलग होता है. Cookies is for local data. Cookies website function करने के लिए it stores some amount of data in your computer. Proper functioning के लिए वो cookies होता है. हाँ, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जो होता है. बहुत लोग SEO करते हैं. हर कंपनी SEO करने की कोशिश करती है to rank in the top. Anyway, clear है सबको? कोई क्वेश्चन पूछे तो this is what we have about CCI, good amendment. So this was the news that I had for you today. Time भी over हो गया हमारा. कोई क्वेश्चन? एंड हाँ, प्लीज 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 and please watch that video. It will give you complete information about how to prepare notes, how to do other things. ठीक है? Welcome everyone. Bye, and we will meet again uh, next Saturday with some other amazing news and amazing debates and discussion. Very welcome Aditya, Rohit, Ambar, Anjali. Again, एक second. You people have access to the folder, current event folder. किसके पास नहीं है? The new student. I think उसने leave कर दिया. He was too early to leave. Please send a hi here. मैं ID email ID लिख रहा हूँ. Please send a hi here. I will add you to the folder. Misha, you go. Anyone who does not have access to the current event folder, please send me. I will add you. It has all the PPT of all the current event. Yes, send me on the mail. ये जो mail मैंने लिखा है इस पे भेजिए मुझे. From your office, from a mail ID, send it. I will add your mail ID to the folder and you can access it. It has all the PPT of all the classes. With that note, bye bye everyone. Have a nice weekend. We will meet again on Saturday. And for remaining people, we will meet again in different classes. Okay.